Court designated 11 women coming from different parts of the country as senior advocates in one selection. Our legitimacy will endure from the inclusion of diverse sections of the population in our system. Therefore, we need to make more efforts to bring different sections of society into the legal profession. For instance, the representation of scheduled castes and scheduled tribes is quite low, both at the bar as well as on the bench. In the near future, we must address the structural issues affecting the judiciary, such as the pendency of cases, our archaic procedures, and the culture of adjournments. Our effort in our work as judges and administrators must be to ensure dignity to the district judiciary, which is the first point of contact for our citizens. Our ability to remain relevant as an institution requires us to recognize challenges and begin difficult conversations. And I'll highlight 4 issues as I conclude on difficult conversations. First, we must emerge out of the adjournment culture to a culture of professionalism in our courts. Second, we have to ensure that the length of oral arguments does not interminably delay judicial outcomes and lead to the capture of judicial institutions by the powerful and the mighty. Third, the legal profession must provide a level playing field for first-generation lawyers, men, women, and others from marginalized segments who have the will to work hard and the potential to succeed. And fourth, let us begin the conversation on long vacations and decide, of course in consultation with the bar, whether alternatives such as flexi time for lawyers and judges is possible. The 75th year since the founding provides an opportunity to meet these challenges and step into the future with an honest assessment of our progress. We must reflect on the journey that we have traversed and renew our pledge to uphold the Constitution within and beyond our courtrooms. Our mission to make the judiciary accessible to all would be incomplete without the support of our high courts. I thank the judges and the staff of all the high courts, as indeed I thank my own colleagues and staff in the Supreme Court in facilitating our initiatives which are being launched today. Thank you. Namaskar. Thank you so much, sir, for this insightful and eloquent address. Your words will continue to resonate with each one of us present here for all times to come. When the winds of change blow, some people and institutions build walls, while the others build windmills. Taking note of the winds of technological progress and change blowing across the world, the judges and the administration of the Honorable Supreme Court of India decided to embrace and harness the transformative power of technology to enhance accessibility, efficiency, and transparency within the judicial system. As the Supreme Court of India enters a brave new world of technological advancement, it continues to make incredible strides in its institutional journey. Today, we shall witness the launch of 3 citizen-centric e-initiatives of the Supreme Court of India, such as the Digital Supreme Court Reports, DigiSCR, the Digital Courts 2.0, and the new website of the Supreme Court of India. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने समक्ष रखे हुए रिमोट का बटन दबाकर इन इनिशिएटिव्स का औपचारिक रूप से लोकार्पण करें। The Supreme Court of India has consistently striven to assimilate tools of technology in its core operations to enhance access to justice and improve administration of justice.
supported by National Informatics Centre of the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India in this endeavour. The court has launched a series of citizen-centric services with the aid of IT. On the historic Diamond Jubilee celebrations, the Supreme Court adds 3 more initiatives to its repertoire of e-services. DSCR marks the commitment of Supreme Court of India to make its judgments available to citizens, especially law students and young lawyers, free of cost in easily accessible digital format. DSCR shall provide free access to all 519 volumes of the Supreme Court reports since 1950. Volume-wise, bookmarked and in open access, easily available for download. Users can view the reports in any mode of their choice. The reports can be accessed in standard HTML mode for quick viewing. One may choose the flip viewing option for book-like experience while browsing through any chosen report. The reports can also be viewed in a PDF format. Using DSCR, a user can easily cite and email the digital report to one or more persons. The platform provides multiple search parameters such as party name, year, volume, case type, etc. to enable wide searchability for the users. DSCR marks a monumental shift from print to digital format, contributing to environmental sustainability by eliminating carbon footprint associated with print publications. The Supreme Court of India has also launched the ESCR platform, which provides free digital access of its reportable judgments. ESCR is available in English and Hindi languages. To ensure wider access, the Supreme Court of India is translating its judgments in Hindi and other Indian languages using machine learning technology. Around 36,000 judgments have been translated in Hindi and nearly 11,000 judgments have been translated in other Indian languages. Digital Courts 2.0 has been launched by the E-Committee in collaboration with Department of Justice under E-Courts project to make court records available to judges of district courts, coupled with use of artificial intelligence for transcribing speech to text. Integration of Digital Courts 2.0 with NIC's artificial intelligence powered tool Shruti shall facilitate judges to dictate orders, judgments and record testimonies of witnesses on real-time basis, thereby ensuring a speedy judicial process. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि 14 जनवरी 2016 को प्रातः 7 बजे अपीलकर्ता का दूसरे प्रत्यर्थी शिकायतकर्ता इसके बाद के साथ जल निकासी के मुद्दे पर विवाद चल रहा था. The dictated text will be converted to document format using built-in template with QR code, case number, party details, advocates and name and designation of judge. Digital Court 2.0 will enable the presiding officer to speed up daily court proceedings, ensuring accuracy and efficiency, and also result in a big leap towards complete transition to paperless court. Presently, Shruti provides automatic speech recognition for 7 languages, namely English, Hindi, Marathi, Tamil, Telugu, Kannada and Bangla. The E-Committee intends to implement the Digital Courts 2.0 in a phased manner across district courts of the country. Marking another milestone in transparency and accessibility, the Supreme Court of India has, in close coordination with NIC, launched its brand new revamped website offering an improved user experience for citizens through its dynamic functional design, user-friendly interface and robust content management. The revamped website offers convenient access to a bouquet of information on the organization, quick links of essential technology-based services, key documents and important updates
and notices for advocates, litigants, court official and citizens. Developed within the S3WAAS framework of NIC, the new website ensures greater accessibility for differently abled users and is fully compliant with requirements of government websites. The website will be available in English and Hindi languages for wider access. Committed to make the judicial process accessible and efficient, the Supreme Court of India is all set to revolutionize the courtroom experience by adopting cutting-edge futuristic technology. Futuristic court technology has already been deployed in 3 courts, including Chief Justice's Court, with the remaining courtrooms to be equipped with such technology very soon. On this special occasion, may I now request the Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, to present a memento to the Honorable Prime Minister of India. अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वो इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों एवं श्रोतागण को अपने अमूल्य शब्दों से संबोधित करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तिगण, विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विदेशों से आए हुए हमारे मेहमान जजेस, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी जी, बार काउंसिल के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदिश अग्रवाला जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 2 दिन पहले भारत के संविधान ने अपने 75 वर्ष में प्रवेश किया है। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी 75वें वर्ष का शुभारंभ हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच आना अपने आप में सुखद है। मैं आप सभी न्यायविदों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया। 7 दशकों से भी लंबी इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इन फैसलों ने देश के सोशियो पॉलिटिकल परिवेश को एक नई दिशा दी है। साथियों, आज भारत की हर संस्था, हर संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका,
अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को सामने रखकर काम कर रही है। इसी सोच के साथ आज देश में बड़े बड़े रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। भारत की आज की आर्थिक नीतियां कल के उज्जवल भारत का आधार बनेगी। भारत में आज बनाए जा रहे कानून कल के उज्जवल भारत को और मजबूत करेंगे। बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। ऐसे में आज भारत के लिए जरूरी है कि हम हर अवसर का लाभ उठाएं, कोई भी अवसर जाने न दें। आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। इसके लिए दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। ये तो आपका विषय है, ताली बजा सकते हैं। मनन मिश्रा में ताली न बजाए वो तो मैं समझ सकता हूं, वो आपके लिए कठिन काम था। मुझे खुशी है कि देश भर की अदालतों के डिजिटाइजेशन को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार अदालतों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद से इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की जा चुकी है। मैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। साथियों, आज आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव का शुभारंभ करने का भी मौका दिया है। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स की मदद से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल सकेंगे।
मुझे देखकर अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट कराने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि देश की अन्य अदालतों में भी जल्द ऐसी व्यवस्था हो सकेगी। साथियों, आज टेक्नोलॉजी कैसे ईज ऑफ जस्टिस में मददगार साबित हो सकती है, इसका एक कार्यक्रम अपने आप में एक उदाहरण है। मेरा ये संबोधन अभी एआई की मदद से इसी वक्त इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है और आप में से कुछ लोग भाषिणी ऐप के माध्यम से उसे सुन भी रहे हैं। कुछ शुरुआती दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी कितना बड़ा कमाल कर सकती है, ये इससे पता चलता है। हमारी अदालतों में भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सामान्य नागरिकों का जीवन आसान बनाया जा सकता है। आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले कानूनों को सरल भाषा में लिखे जाने की बात कही थी। मैं समझता हूं कि अदालत के निर्णयों का आसान भाषा में लिखे जाने से आम लोगों को और मदद मिलेगी। साथियों, अमृतकाल के हमारे कानूनों में भारतीयता और आधुनिकता की समान भावना दिखनी भी उतनी आवश्यक है। वर्तमान की परिस्थितियां और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप सरकार भी कानूनों को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। इन बदलावों के कारण हमारे लीगल, पॉलिसिंग और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने नए दौर में प्रवेश किया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सैकड़ों वर्ष पुराने कानूनों से नए कानूनों तक पहुंचने का परिवर्तन सहज हो, यह बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले ही सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वो भी सभी स्टेक होल्डर्स की ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी आगे आए। साथियों, एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है। सरकार भी लगातार एक विश्वस्त व्यवस्था बनाने के लिए अनेक निर्णय कर रही है। जन विश्वास बिल इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे आने वाले समय में न्याय व्यवस्था पर बेवजह पड़ने वाला बोझ कम होगा। इससे पेंडिंग केसेस की संख्या भी घटेगी। आप जानते हैं कि सरकार द्वारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए लॉ ऑफ मीडिएशन की व्यवस्था भी की गई है। इससे भी हमारी न्यायपालिका, विशेष रूप से सब ऑर्डिनेट जुडिशरी पर पड़ने वाला बोझ कम हो रहा है। साथियों, सभी के प्रयास से ही भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। और इसमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अगले 25 वर्षों की भी बड़ी सकारात्मक भूमिका है। एक बार फिर आप सबने यहां मुझे निमंत्रित किया।
आप सबके ध्यान में शायद एक बात आई होगी, लेकिन ये फोरम ऐसा है कि मुझे लगता है कि उसका जिक्र करना मुझे अच्छा लगेगा। इस बार जो पद्मा अवार्ड जो दिए गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और समग्र एशिया की पहली मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट जज, उनको इस बार फातिमा जी को हमने पद्म भूषण सम्मान दिया है और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। एक बार फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को उसके 75 वर्ष पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके गरिमामय उद्बोधन के लिए हम तहे दिल से आपको आभार व्यक्त करते हैं। Finally, I request Justice B.R. Gavai, Judge Supreme Court of India, to kindly deliver the vote of thanks. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Mrs. Chandrachud, my distinguished colleague Justice Sanjeev Khanna, and my esteemed colleagues on the bench, former Chief Justices and former judges of the Supreme Court of India, Chief Justices and judges from the judiciaries of Bangladesh, Bhutan, Mauritius, Nepal, and Sri Lanka, Union Minister of State of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal ji, the Learned Attorney General for India, Shri R. Venkatramani, Chief Justices and Judges of the High Courts, Shri Tushar Mehta, Solicitor General of India and the Law Officers, Shri Rahate, Secretary Justice, Shri Nitin Chandra, Secretary Law, Chairman of the Bar Council of India, Shri Manan Kumar Mishra ji, President of the Supreme Court Bar Association, Dr. Adish Agarwala, and all the office bearers, Shri Manoj Mishra, the President and other office bearers of SCORA, members of the Bar, Registry, and citizens of India who have joined us virtually. I am honored to propose a vote of thanks in an event which marks the beginning of the 75th year of the Supreme Court of India. This institution was envisaged with tremendous expectations as India shifted from a colonial system to a constitutional system. The framers of the Constitution considered the right to approach the Supreme Court to seek remedies against violation of rights so important that they incorporated it in the Fundamental Rights chapter itself. The constitution of the Supreme Court symbolizes the balance of justice which the framers intended to create. That is an institution that will act as a shield for the citizens against the excesses of power. The preamble of the Indian Constitution reflects the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity, emphasizing the commitment to securing justice for all citizens. The Supreme Court, as the apex judicial authority, plays a central role in ensuring the realization of these ideals. Referring to Article 32 of the Indian Constitution, which provides for citizens to approach the Supreme Court, Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution, once said, and I quote, "If I was asked to name any particular article in this Constitution as the most important, an article without which this Constitution would be a nullity, I could not refer to any other article except Article 32. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it," unquote. Over the last 74 years, the Supreme Court has indeed acted as the heart and soul of the Constitution. Through its judgments, the court has safeguarded the rights of citizens on numerous occasions. Today's event provides expression to the commitment
which the judges have carried in the last 74 years. Today, we have also launched a few new initiatives. This shows the continuing dedication of the court to make its process accessible and feasible for the common citizen. The Constitution also emphasizes on social and economic justice in addition to political justice, as Dr. Ambedkar has stated in his last address to the Constituent Assembly on 25th of November 1949. It cannot be denied that in the last 74 years of the functioning of the Constitution of India, all the three wings of the state, the legislature, the executive, and the judiciary have worked towards achieving the goals of social, economic, and political equality. In particular, the judiciary and the executive adopted a collaborative approach to ensure that the Supreme Court keeps on working at its full strength. The judiciary, the parliament, and the executive have been emphasizing on the need for diversity and representation of various sections of society in the judiciary. We have been making active effort to ensure this, and our effort shall continue. Since the Honorable Chief Justice of the High Courts are present here, I would earnestly request them to keep this in mind while making recommendations of elevations for the various High Courts. I thank the Honorable Prime Minister of India from the bottom of my heart for sparing time from his busy schedule to join us and share his thoughts and vision today, and also for launching the new initiatives of the Supreme Court of India. I extend my thanks to the Chief Justice of India, who as the head of the family of Indian judiciary, took a lead in organizing today's extraordinary event. I am grateful to Honorable the Chief Justice of India for fulfilling the long-standing demand of installing the statue of Dr. B.R. Ambedkar in the premises of the Supreme Court of India, and also for giving me an opportunity to play an important role in the said project. It is only because of Dr. Ambedkar and the Constitution of India as framed by him and his colleagues, a person like me, who began his schooling in a municipal school situated in a slum area, could reach to this position. I'll be failing in my duty if I do not place on record my deep appreciation for the efforts taken by the learned Secretary General and the team of the Supreme Court Registry involved in this project in completing the task in the shortest possible time. Thanks to my colleague Justice Sanjeev Khanna and my other colleagues from the bench for their contributions in today's event. I also thank Shri Arjun Ram Meghwal, the Union Minister of State for Law and Justice, for his continuous support in our endeavors. I also thank distinguished guests on the dais and off the dais, including Honorable Chief Justices and Justices from the neighboring countries, respected former Chief Justices of India and judges of the Supreme Court, Honorable Chief Justices and judges of the High Courts, and the members of the bar for taking out time from their schedule today. Lastly, I thank the Supreme Court Registry and its staff for organizing this event so efficiently. Under the leadership of the Chief Justice of India, the registry comprises senior officers and young officers drawn from different parts of the country, whose combined energy forms the backbone of the working of the Supreme Court. We look forward to the year-long celebrations that will be organized by the Supreme Court of India over this entire year, with a focus on engaging with the citizens. As it is said in Marathi, जनतेचे कल्याण हा पहिला कायदा आहे. People's welfare is our first rule. Thank you very much. Jai Hind. With this, we come to the end of the program. I request the august gathering here to kindly wait until the Honorable Prime Minister and other distinguished dignitaries leave the auditorium. तो सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती समारोह की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे थे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर इसका उद्घाटन किया और साथ ही
Who visits India will notice a striking feature of the changing demographic. Who visits India will notice a striking feature of the changing demographics of the nation. Now, women can be seen in important positions.